अच्छी तरीके से सुन पा रहे हैं तो मेरे पीछे दोनों हाथ ऊपर करें, आनंद से ऊपर करें, चेहरे में एक बड़ी सी मुस्कान लाएं, पीठ सीधी करें और हृदय से बोले हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। क्योंकि सच्ची में आनंद का विषय है, क्योंकि हमारे बीच में आज बहुत स्पेशल गेस्ट हैं, हर गेस्ट सुखवाहा माता जी। ये जोरदार करता ध्वनि नहीं मुझे लगती है। तो जब माता जी से मिला क्यों? क्योंकि माता जी जो है हमारे लिए इतनी तकलीफ करके आई हैं। माता जी एक वृद्ध उम्र की हैं। जब मैं माता जी से मिला तो माता जी को मैंने कहा कि आप यू जस्ट लाइक माय मदर। उन्होंने कहा शायद ग्रैंड मदर। सो यू कैन इमेजिन हर एज। सो माता जी joined very early in the movement, लगभग 1974, जब वो कुछ 21 साल की थी, 20-21 साल की थी, तब उस आंदोलन से जुड़ी। माता जी ने अपना सोशल वेलफेयर डिग्री किया है पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी से, और उनका परवरिश एक प्रोटेस्टेंट फैमिली में हुआ। क्योंकि उनका परवरिश एक स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर में हुआ, तो नेचुरली हीलिंग अदर्स एंड हेल्पिंग अदर्स वो एक शायद खून में था। और जैसे माता जी ISKCON से जुड़ी तो कुछ सेवा माता जी की स्वाभाविक थी। माता जी एक बहुत अच्छी प्रचारक और एक काउंसलर तो हैं ही, लेकिन ISKCON के माध्यम से माता जी इंटरफेथ मिनिस्टर भी बनी और बहुत सारे सोशल वेलफेयर प्रोग्राम से माता जी का हाथ रहता है। जैसे कुछ ही लोग जानते होंगे ISKCON का एक बहुत सुंदर हॉस्पिटल है बॉम्बे में, भक्ति विधान हॉस्पिटल। कितने लोगों ने नाम सुना है? तो माता जी स्पिरिचुअल केयर डिपार्टमेंट वहाँ का देखती हैं। और बरसाना में हर साल एक बहुत सुंदर आई कैंप लगता है, जिसमें सब धामवासियों का मुफ्त में आई ट्रीटमेंट होता है, कैटरैक्ट ट्रीटमेंट होता है। कोई भी एक ऐसी आंखों की बीमारी मुफ्त में इलाज किया जाता है ISKCON के माध्यम से। माता जी उसमें बहुत अच्छी तरीके से सेवा करती हैं। और माता जी का जो स्पेशलाइजेशन है वो एक इमोशनल हीलिंग और स्पेसिफिकली ऐसे केसेस जो कि ग्रीफ और ट्रॉमा से गुजरे हैं, उनको उस ट्रॉमा से, उस ग्रीफ से बाहर निकालने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका माता जी निभाती है। इसलिए माता जी जो है शी इज़ वेरी वेल नोन फॉर 4 ऑफ हर वंडरफुल वर्क्स। 4 उनकी माता जी की बहुत सुंदर किताबें हैं जो कि आपके सामने हैं, आप बाद में देख सकते हैं। सो शी ट्रैवल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड हेल्प्स डिवोटीज मेक प्रोग्रेस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड ओवरकम ऑल द डिफिकल्टीज इन देयर स्पिरिचुअल एंड इन देयर नॉर्मल लाइफ्स। हमारा परम सौभाग्य है, माता जी हमारे मंदिर में थी तो मैंने स्पेशली रिक्वेस्ट किया कि सोमवार का दिन है, कार्यक्रम होना है, अगर आपका आशीर्वाद रहे तो एक बहुत सुंदर जो है हम लोग सबको आमंत्रित करके सब अपना आशीर्वचना सबको दे सकते हैं। तो माता जी ने कृपा करके उसकी अनुमति दी, तो आज हमारे बीच में है। तो फिर से एक बार भगवान के नामों का उच्चारण करके माता जी का स्वागत करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि जो हमें सिखाया हम अच्छी तरीके से ग्रहण करके अपने आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ सकें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है, आप लोगों में से कितने लोगों को हिंदी में अनुवाद चाहिए होगा? हिंदी में अगर ट्रांसलेशन करें तो ज़्यादा आसान होगा समझना। हाथ खड़ा करें, जोर से हाथ खड़ा करें तो आसान रहेगा। हिंदी में अगर रहेगा जोर से हाथ खड़ा करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 2 चॉइसेस हैं। एक चॉइस तो ये है कि हम साइड बाय साइड ट्रांसलेशन करें, लेकिन उसमें स्पीड स्लो हो जाती है स्पीकर की। और एक ऑप्शन ये है कि हम पीछे 10 लोग पीछे जाकर ट्रांसलेशन पीछे हो और नॉर्मल क्लास, लेकिन उसमें क्या होता है कि जब पीछे ट्रांसलेशन अलग से होती है तो ट्रांसलेटर जो उसको कैच करके बोलना मुश्किल होता है। तो ये डर होता है कि वो 10 लोग शायद क्लास में लूज हो जाएं और क्लास कैच ना कर पाए। तो आपका क्या राय रहेगा? हम ऑप्शन ए जाएं या ऑप्शन बी जाएं? ऑप्शन ए कि साइड बाय साइड ट्रांसलेशन करें, साइड बाय साइड। ऑप्शन बी हम जो है वो पीछे ट्रांसलेशन करें ताकि नॉर्मल क्लास आगे चले और ट्रांसलेशन पीछे चले। कितने लोग कहते हैं ऑप्शन ए? सो दे आर आल्सो रिक्वेस्टिंग मदर टू गो साइड बाय साइड। I don't need a laptop. आप तो प्रेमा They're also feeling what you're saying. I got it.
का हम साइड बाय साइड ट्रांसलेशन करेंगे। हम स्वागत करते हैं इस गिफ्ट प्रेमांजन प्रभु का भी। प्रेमांजन प्रभु किसी तरीके के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोग उनको नहीं जानते हैं। प्रेमांजन प्रभु जो है वो हमारे कम्युनिकेशन डायरेक्टर हैं ISKCON पंजाबी विभाग के, और कम्युनिकेशन डायरेक्टर हैं ISKCON पंजाबी विभाग के, और ऊपर हो गए आश्रम में लगभग 15 साल से ऊपर हो गए। और बहुत सारी सेवाएं प्रेमांजन प्रभु। थैंक यू वेरी मच। I'm going to hold the mic for now. Hi Krishna. Good evening and welcome. I'd first like to start with a prayer. I was born in the darkness of ignorance, and my spiritual master is kindly, continually opening my eyes again and again from the darkness of ignorance with his torchlight of knowledge. I offer my respectful obeisances to him again and again. Dear Srila Prabhupada, dear Lord Krishna, we are gathered here to grow and learn. Please allow our session together to be relevant and practically, so we can take new steps every day to come closer to you. Thank you. So, Hare Krishna. I was asked to give a class about spiritual relationships. मुझे ये बोला गया था कि आध्यात्मिक संवादों के ऊपर मैं कक्षा लूं। In an hour or less. 1 घंटे में या से कम। So, let's talk about relationships. तो इसलिए संवादों के बारे में बात करते हैं। Let's see. What does it mean to have a relationship? What are some of the characteristics of relationship, spiritual relationship? What's some of the characteristics? एक संबंध का होने का क्या अर्थ होता है? उसके क्या characteristics होते हैं? This is where you raise your hand or chime in, please. To know each other. To know each other, nice. Most of the relationships are based on give and take, like we give something in the relationship. Give and take, reciprocation, giving and receiving. What did you want to say? Having faith in one another. Having faith in one another, trust in one another. Trust. Respect. 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 Unconditional love. Unconditional love, faith, respect, trust, reciprocation, and connection, right? What did you say? Knowing each other. Knowing each other. Okay, you guys got the class down, okay. Can you repeat all those? Knowing one another. एक दूसरे को जानना, ऐसे बात स्पष्ट है? विचारी आवाज। एक दूसरे को जानना, एक दूसरे पे विश्वास रखना, रेसिप्रोकेशन, एक दूसरे के साथ लेन देन करना, आश्रद्धा रखना, निस्वार्थ भाव से प्रेम करना, तो ये सारी चीजें। There you go. Okay. So that's a good foundation. How many of you are engineers? आप में से कितने लोग इंजीनियर हैं यहाँ? Engineers. Okay, so what's the most important part of the building? तो एक बिल्डिंग का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या होता है? Infrastructure development. Foundation. The foundation. उसका आधार। Okay. Any of you IT professionals? आप में से कितने लोग IT प्रोफेशनल्स हैं? Okay, some IT, more engineers. Okay. All right, so the foundation is the most important. So, in our relationships, we all have relationships.
हम सबके कुछ ना कुछ संबंध है और उन संबंधों में in our relationships, who is the common denominator? तो कौन है जो उसमें कॉमन डिनोमिनेटर कौन है? No. I said who. So I have a relationship with my children. I have a relationship with my friends. I have a relationship with my colleagues. Who is the common denominator? Go ahead. Myself. Okay. Do you want to say it again? मेरा अपने बच्चों के साथ रिलेशनशिप है, मेरा मित्रों के साथ है, पति पत्नी के साथ है, तो इन सब में कॉमन क्या है? So, I have a lot to do with my relationships. तो मैं, ये कॉमन है और मेरा सारे संबंधों में बहुत अहम भूमिका है. So, this is the foundation of relationships right here. तो ये सारे संबंधों के आधार है यहीं पर. So, let's inquire, what is my relationship like with my own self? तो आइए हम एक बार जिज्ञासा करते हैं कि मेरा खुद के साथ क्या संबंध है. How many of you understand that you're not this body? आप में से कितने लोग हैं जो ये समझते हैं कि आप शरीर नहीं हैं And you're not your mind और आप मन नहीं हैं or your false ego? या अपना झूठा अहंकार नहीं है? How many of you kind of understand that? आप में से कितने लोग हैं जो इस बात को समझते हैं? We know it, but we don't know it. Okay, We don't understand. we'll get there. So, how many of you consider your mind to be your worst enemy? आप में से कितने लोग हैं जो अपने मन को अपना सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं? Okay. So, what's it like living with your worst enemy? Tell me. अपने सबसे बड़े शत्रु के साथ रहना कैसा लगता है? What's it like? Give me one word description. What does it feel like? 24/7 living with your worst enemy. Cheated. It's constant battle. Constant battle. Come on, what's it like? In depression. Depressing. Come on, what's it like living with your worst enemy? Be honest. I'm sorry? Being betrayed. What's it like living with your worst enemy? Dishonest with ourselves. I'm sorry? Dishonest with ourselves. It disconnects us with our self. Always fighting. Insecure. Insecure, Always fighting. always fighting, stress, fearful, confusing sometimes, frustrating, stressful. You said that, right? Yeah. My goodness gracious. And that's the They understand. Okay. And that's the relationship we have with ourselves. तो ऐसा संबंध खुद के साथ होना, इस बात की कल्पना करके देखिए. Now, what part of us is going to have a relationship with another person? तो हमारा कौन सा ऐसा भाग है खुद का, ऐसा कौन सा अंश है जिसका दूसरों के साथ संबंध होगा? Mind. It could be our mind, it could be our stressful mind, it could be all of that. तो हमारा खुद का मन हो सकता है, स्ट्रेसफुल मन हो सकता है, या वो सब हो सकता है. So, our relationship with ourself is most probably going to impact our relationship with each and every other person. तो हमारा खुद के साथ जैसा संबंध है वो वैसा प्रभाव डालेगा मेरा दूसरों के साथ कैसा संबंध है उस पर. So, let's start with what she said. When you want to have a relationship, you want to know one another. तो जैसे माता जी ने कहा कि जब आपका संबंध होता है किसी के साथ तो आप उनको ज्यादा जानना चाहते हैं. Do we know ourselves? तो क्या मैं खुद को जानता हूँ? Okay. So, why, let's think about this. What part
what part is our self to know? What part is the part of our self to know? तो ऐसा कौन सा अंश है हमारे खुद का जो जानने योग्य है? What part of ourself can we mostly see? अंतरात्मा, Soul. soul. We can? Wow, here you can give the class. तो ऐसा कौन सा हमारा खुद का अंश है जो जिसको मैं देख सकती हूँ? तो प्रभु जी ने कहा कि आत्मा। तो माता जी उनको माइक दे रही है, वाह, अब आप कक्षा दीजिए क्योंकि परम सिद्धि का स्तर। So we have something like a software programming. हम सबके पास कुछ है सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग के समान है। We could call it our conditioning. हम उसको नाम दे सकते हैं हमारी बद्धता। We could call it our false ego. हम उसको नाम दे सकते हैं झूठा अहंकार। It's the thing that helps us to function in the world. वो चीज है जो हमें सहायता करती है इस संसार में कार्य करने के लिए। We all have these false ego mechanisms. They're designed to help us, just like we have a mind to help us. तो ये सारे मैकेनिज्म हैं हमारे पास जैसे झूठे अहंकार के जो हमें सहायता करते हैं कार्य करने के लिए संसार में, जैसे मन है हमारा। Yeah. The problem is, I would assert that we know the software programming of our cell phone and we understand the software programming of our cell phone more than we understand our own software programming of the sophisticated machinery. तो मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि आज के समय में जो हमारा मोबाइल फोन है उसका सॉफ्टवेयर की समझ हमारी ज़्यादा है बजाय हमारे खुद का आंतरिक जो सॉफ्टवेयर है उसके तुलना में। What happens when we don't understand the software programming of a machine? What happens? क्या होता है जब हम एक मशीन का जो सॉफ्टवेयर है उसको उसकी समझ ना हो तब क्या होता है? Misuse, time consuming, difficult to operate, Disharmony. malfunctioning, Disharmony in life. disharmony, Wastage of time. wastage of time, distraction. Yeah, all of those things. If you don't understand if you don't understand the machinery, you're going to waste a lot of time and you're usually going to be just on the default mode because you don't understand the programming. अगर आपको किसी मशीन का सॉफ्टवेयर नहीं पता तो बहुत सारा समय हो सकता है व्यय हो जाए, वेस्ट हो जाए और बहुत बार आप उसका जो सिर्फ डिफॉल्ट सेटिंग है सिर्फ उसी पे कार्य करेंगे। Are you going to hurt your voice? Why don't you use the microphone? It's okay. I'm at normal range. All right. You know your programming. Echoing a lot. Oh, it's echoing. Okay. So, when we get to understand our programming, we can understand how to connect with others, not from our programming to their programming, but from heart to heart. जब हम अपने खुद का प्रोग्रामिंग समझ जाएं, That's worse. Isn't it? जब हम अपने खुद का प्रोग्रामिंग समझ जाएंगे तब हम एक दूसरे व्यक्ति के साथ जो संबंध है बजाय इसके कि अपने खुद के प्रोग्राम को दूसरे व्यक्ति के प्रोग्राम के साथ संबंध जोड़ने की तुलना में मैं अपने हृदय से दूसरे व्यक्ति के हृदय के साथ संबंध जोड़ सकता हूँ। So how many of you know maybe a little bit about your false ego programming? Just a little bit. आप में से कितने लोग हैं जो बिल्कुल थोड़ा सा भी एटलीस्ट समझते हैं अपने जो झूठा अहंकार की जो प्रोग्रामिंग है उसके बारे में? And how do you feel about your software programming? और जो आपका आंतरिक सॉफ्टवेयर है उसके बारे में आपकी क्या भावना है? Do you appreciate your programming? Do you like your programming? Tell me. It doesn't listen to. It doesn't listen to me. I don't like my programming. It is always malfunctioning. It's always malfunctioning. It doesn't look real. I'm sorry? It appears real. It appears real. It sure does. That causes a lot of problems. So here we are living in this machine. We live in this machine. We hate the software programming. And we're mined with the monitor screen.
We consider the monitor screen our enemy. तो अब ये स्थिति है कि मैं अपने शरीर में रह रहा हूँ, अपने आंतरिक जो मेरी प्रोग्रामिंग है उसको मैं पसंद नहीं करता, और जो मेरा मन है वो एक मॉनिटर स्क्रीन की तरह है. So this relationship we have with our own machinery is pretty dysfunctional and pretty frustrating. तो जो मेरा अभी वर्तमान में संबंध है खुद की मशीनरी के साथ, खुद के प्रोग्रामिंग के साथ, वो माल फंक्शन कर रहा है या फ्रस्ट्रेटिंग है. And now we're going to go have a relationship with another person. Watch. तो अब हम दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध बनाएंगे. We're going to have a relationship with another person who has difficulty with their programming, and they're resisting their programming. We're going to have a relationship with this person. और अब हम दूसरे व्यक्ति के साथ अपना संबंध बनाने जा रहे हैं जो अपने खुद की प्रोग्रामिंग के साथ संघर्ष कर रहा है. How do you think that's going to work out? तो ये आपको कैसे लगता है कि कार्यरत रहेगा? Electric shock. Yeah, that's what usually happens, right? So, as souls in a human machine, this human form of life is the most challenging life there is. It's the most challenging life there is. तो जो एक ऐसी आत्मा जो इस ह्यूमन, ये मनुष्य का जो यंत्र है इसमें अभी जी रही है, तो ये बहुत संघर्षमय यात्रा है एक जीवात्मा के लिए. It's a great opportunity. Don't get me wrong. It's a blessing, and yet it has a lot of responsibility to it. तो ये बहुत बड़ा आशीर्वाद भी है, बहुत बड़ा अवसर भी है, परंतु साथ में बहुत सारे जिम्मेदारी वाला सिचुएशन भी है, बहुत जिम्मेदारी वाली परिस्थिति है. Now, if you go into a job and there's a program that you don't understand, you may not like the program, but you don't understand it. In order to do your job properly, what would be the first thing you would want to do? अगर आप अपने जॉब पे जा रहे हैं, वहाँ पे प्रोग्राम है जिसके बारे में आप नहीं जानते, हो सकता है आपको पसंद नहीं है, बट आपके उसके बारे में नहीं जानते, तो सबसे पहला कदम आप क्या लेंगे? To learn from an experienced person. Learn from an experienced person, get some training about the programming. तो कुछ प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे उस प्रोग्राम के बारे में. That is the foundation. ये आधार है. So there's one thing that all human beings, we're wired similarly. We're not all exactly the same, but we're wired similarly. तो हम सारे जो मनुष्य हैं एक समान नहीं हैं, परंतु हमारी जो इंटरनल सॉफ्टवेयर है उसका एक समान कार्य करता है. Mostly, we're wired to seek pleasure and avoid pain. अधिकतर हम आनंद की खोज में हैं और दर्द से अपने आप को बचाना चाहते हैं. We avoid pain at all costs. हम हर कीमत पर दर्द परिस्थिति से बचना चाहते हैं, दर्द से दूर भागना चाहते हैं. Now remember, we think our mind is our worst enemy and we dislike our programming. इस बात को याद रखिए कि अभी हम ये समझ रहे हैं कि मेरा मन मेरा सबसे बड़ा शत्रु है और मैं अपनी आंतरिक प्रोग्रामिंग को पसंद नहीं करता. And we don't just dislike the programming, we actually think that programming is us. तो ऐसा नहीं है कि वो प्रोग्रामिंग को मैं सिर्फ नापसंद करता हूँ, साथ में मैं ये भी समझता हूँ अधिकतर कि मैं ही वो प्रोग्रामिंग हूँ. So we dislike ourselves, our conditioned selves, and we hate our mind. तो मैं अपने आप को ही पसंद नहीं करता और जो मेरा मन है उससे मैं घृणा करता हूँ. That's painful. और ये बहुत दर्दनाक परिस्थिति है. That's painful. ये बहुत दर्दमय परिस्थिति है. So we can't be with that pain. तो अब मैं उस दर्द के साथ नहीं रहना चाहता. So instead of learning to understand our machine, we take our pain and we throw it on somebody else. अब बजाय इसके कि मैं अपने खुद की मशीनरी को समझूं, तो मैं क्या करता हूँ, उस दर्द को उठाता हूँ और दूसरों की तरफ फेंकता हूँ. If something happens and we are angry, you made me angry. कुछ हुआ और मैं गुस्से में हूँ, तुम्हारी वजह से मैं गुस्से में हूँ. That's the beginning of a great relationship.
तो एक बहुत अच्छे संबंध की शुरुआत। Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur said over a century ago, शिला भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने एक शतक पूर्व लगभग ये कहा, when faults of others delude and misguide you, जब दूसरों के दोष आपको भ्रमित करें या आपको पथ भ्रष्ट करें, have patience, तो धैर्य रखिए, introspect, अवलोकन कीजिए, find faults within yourself. स्वयं के अंदर दोषारोपण कीजिए। No one can harm you unless you harm yourself. कोई अन्य व्यक्ति आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता जब तक आप खुद को नुकसान न पहुंचाएं। Now, William Shakespeare, who's a famous English playwright, he had plays, and one of them was Know Thyself. विलियम शेक्सपियर ने अपने एक रचना में लिखा है, खुद को जानिए, Know thyself. To thine own self be true. और खुद के साथ ईमानदार रहिए। And Bhagavad Gita tells us और भगवत गीता बताती है that we really need to understand the difference between matter and spirit. हमें मैटर और स्पिरिट में अंतर जानना चाहिए। We need to distinguish what the field of activities is that we're working with. हमें क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ में अंतर समझना चाहिए। We need to understand the programming and understand that we are not the programming, but we have programming. तो ये समझना कि मेरी प्रोग्रामिंग है, परंतु मैं खुद वो प्रोग्रामिंग नहीं हूँ, परंतु मेरे पास एक प्रोग्राम है। So when we can see the difference between our programming, and we can see that that's how we're programmed, but it's not who we are, we can start to have a new relationship with ourselves. तो जब हम इस बात को समझ जाएं कि मेरे एक प्रोग्रामिंग है, परंतु मैं वो प्रोग्रामिंग नहीं हूँ, तो मैं एक नया संबंध स्थापित कर सकता हूँ अपने इस आंतरिक प्रोग्राम के साथ। We can start to have a relationship of understanding. हम एक नया संबंध शुरुआत कर सकते हैं जिसका आधार है समझ, Understanding ourselves. खुद को समझना। We can have a relationship of utilizing our mind and our ego mechanism rather than being used by them. अपने मन और जो झूठा अहंकार का जो प्रोग्राम है, इसको मैं इस्तेमाल करना सीख सकता हूँ, समझ सकता हूँ, बजाय इनके द्वारा इस्तेमाल होने के। So how do we utilize the mind and the ego mechanism? How do we utilize it and not be used by it? तो अपने मन और जो हमारा अहंकार का मैकेनिज्म है, इसको मैं कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ और इनके द्वारा इस्तेमाल ना किया जाए? How do you utilize a software program? एक सॉफ्टवेयर को कैसे इस्तेमाल किया जाए? By knowing it, By knowing it, practicing. knowing it, By reading its manual. by reading its manual, by understanding what the option buttons are. By chanting Prabhuji's name. Chanting, I'll talk about chanting, but that's not generally how you understand a software programming, but I'll talk about chanting. By preventing the software to be harmed by the viruses. Okay, and what would be some viruses that might attack us? Maybe lust, anger. I would say the first ones that attack us would be blaming, shaming ourselves, blaming others, shaming others. तो प्रभु जी ने बताया कि जैसे सॉफ्टवेयर है उसको वायरस से रक्षा करना। तो माता जी ने उनसे प्रश्न पूछा, ऐसे कौन कौन से वायरस हैं हो सकता है जो आपको लगता है सॉफ्टवेयर पर अटैक करें? तो माता जी ने कहा कुछ वायरस है कि दूसरों पर दोषारोपण करना, ब्लेम करना, या किसी को शर्मसार करना, शेम करना, या खुद को शर्मसार करना या दूसरों को शर्मसार करना। Those would be viruses which infect us and prevent us from dismantling the program. तो वो कुछ वायरस हो सकते हैं जो हमारे इस प्रोग्राम में बाधा डालें। Our software programming is designed with protective mechanisms.
जो हमारा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है उसके कुछ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म्स हैं कि वो अपने आप को कैसे सुरक्षा प्रदान कर सके. In fact, our software programming is one protective mechanism on top of another. It's all protective mechanisms. और हमारा जो खुद का सॉफ्टवेयर मैकेनिज्म है ये अपने आप में एक सुरक्षा चक्र है एक दूसरे सुरक्षा चक्र के ऊपर. What is the software programming protecting? और वो ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर को सुरक्षा दे रहा है जो हमारी आंतरिक प्रोग्रामिंग है. What's it protecting? It's protecting the programming. It's protecting the programming. कि एक और प्रोग्रामिंग को वो प्रोटेक्ट कर रहा है. It thinks that I am the programming. It thinks it's protecting me. Concise. It thinks it's protecting me, but I think I'm the programming. But we're just protecting the programming. We're not really getting to the real me. तो ये जो प्रोग्राम है ये सुरक्षा प्रदान करता है. एक तो मैं सोचता हूँ कि मैं ये प्रोग्राम हूँ और फिर ये इसी विचारधारा को सुरक्षित प्रदान करने के चक्कर में लगा रहता है. तो हम अपनी असली आंतरिक अवस्था तक तो पहुँचे ही नहीं. Okay. Is it the false ego? I'm sorry? Is it the false ego you're referring to? Yes, yes. The programming is the false ego. Yeah, but the false ego is not us. But we get confused because we don't know who we really are. We've lost our identity. We've lost our real identity. तो प्रभु ने प्रश्न पूछा कि ये प्रोग्रामिंग क्या है, झूठा अहंकार है. माता जी ने कहा हाँ ये झूठा अहंकार को मैं भी रेफर कर रही हूँ प्रोग्रामिंग में और मैं अपनी असली पहचान भूल चुकी हूँ. And then Krishna kindly gives us this programming so that we have some way to function in the world. Otherwise we would just be vegetables. We have some way to learn how to talk and think and interact. It gives us some way to function. You need a software programming to function. तो इस संसार में कार्य करने के लिए मुझे कुछ पहचान चाहिए. तो कृष्ण से मेरे को वो पहचान प्राप्त हुई है जिसको झूठा अहंकार कहते हैं कि अगर ये पहचान नहीं होगी तो हम कैसे कार्य करेंगे. हम बिल्कुल एक जड़ वस्तु के समान बन जाएंगे. The problem is not with the programming itself. The problem is we think we're the programming. तो समस्या मेरे प्रोग्रामिंग के साथ नहीं है. समस्या तब आती है जब मैं अपनी पहचान इस प्रोग्रामिंग के साथ करना शुरू कर देता हूँ. So if I think I'm my programming and you think you're your programming, when we're interacting, who's interacting? जब मैं सोचता हूँ कि मैं ये झूठा अहंकार मैं ये हूँ अपनी प्रोग्रामिंग को और ये समझता हूँ कि जो सामने वाला व्यक्ति है ये भी अपनी प्रोग्रामिंग है और उनके साथ मैं लेन देन करता हूँ तो वास्तव में किन का लेन देन हो रहा है. Yeah, and we're usually on the default mode. We're usually on autopilot. और अधिकांश अवस्था में जो भी मेरा डिफॉल्ट मोड है और सामने वाले का जो डिफॉल्ट मोड है उस डिफॉल्ट मोड पे आपस में एक दूसरे से आदान प्रदान होता है. So I have my preconceived beliefs and notions about the ways things should be according to my programming. तो मेरे कुछ धारणाएं हैं, मत है, विचार है अपनी प्रोग्रामिंग के अनुसार कि कैसे चीजों को होना चाहिए. And you have yours according to your programming, culture and upbringing and all that. और सामने वाले व्यक्ति के अपने विचारधारा है, उनके कल्चर, उनकी कैसे परवरिश हुई है उसके अनुसार. And if we don't agree, we're probably just arguing about our programs, not about anything really deep. और जब हम एक दूसरे के साथ आर्ग्यू कर रहे हैं तो मूलभूत अपने प्रोग्रामिंग के आधार पर आदान प्रदान कर रहे हैं, आर्ग्यू कर रहे हैं. उसमें कोई गहराई नहीं होगी. So how do we get to understand our programming, and how can we find that soul that's inside of us that really yearns to have really true and deep relationships with other persons? तो कैसे मैं उस प्रोग्रामिंग को समझ सकता हूँ और उससे गहराई में अपनी आत्मा तक पहुँच सकता हूँ जो हमेशा इस बात के लिए ललायत रहती है कि बहुत संतुष्टता और प्रेम के आधार पर आदान प्रदान हो. So you've all come to Krishna consciousness, you've all come to the temple, to have a little bit of an understanding of
how can I get to know who I really am? आप सब कृष्ण भावनामृत में आए हैं, मंदिर से जुड़े हैं, कहीं ना कहीं आपके अंदर ये भावना है इस बात को समझने की कि मैं वास्तव में कौन हूँ, इसको समझूं। And we're told that chanting Hare Krishna helps to purify us. और हमें ये बताया जाता है कि हरे कृष्ण महामंत्र जब हम जप करते हैं इससे हमारा शुद्धिकरण होता है। And it certainly does. और निश्चित रूप से होता है। And Krishna consciousness is not an automatic mechanical process. और साथ ही साथ कृष्ण भावनामृत कोई स्वचालित ऑटोमेटिक प्रोसेस नहीं है। It's not that we just plug in, we just chant and go to the temple and automatically everything bad just evaporates. ऐसा नहीं है कि मैंने स्विच के अंदर कुछ लगाया, जप किया, मंदिर गया और स्वतः सारी जो बुरी चीजें हैं और वो सब चली जाएंगी। Remember, as souls in human machines, we're seeking pleasure and we're avoiding pain. इस बात को याद रखिए, जो एक आत्मा जो एक मनुष्य के यंत्र रूपी इस शरीर में है, वो हमेशा आनंद की खोज कर रही है और दर्द से बचना चाह रही है। And we try to do that with quick fixes, right? और ऐसा करने के लिए कुछ भी हमारे हाथ में हासिल हो जाए तुरंत उसको अपनाना चाहते हैं। We want to fix ourselves as quick as we can, right? तो हम अपने आप को फिक्स करना चाहते हैं जितना जल्दी हो सके। So Krishna consciousness is not a quick fix. तो कृष्ण भावनामृत वो कोई जल्दी कोई लगाने वाला ऐसा फॉर्मूला नहीं है। It's a beautiful, intensive, long-term process which purifies our heart so we can find ourselves again. तो एक बहुत ही सुंदर, लंबा और बहुत ही गहरा एक विधि है जिससे हमारा हृदय शुद्ध हो सकता है और मैं अपनी असली जो पहचान है उसका साक्षात्कार कर सकता हूँ। So what does the chanting do? तो जो जप है वो क्या करता है? I liken the chanting to making ghee. मैं जप की तुलना करती हूँ जो घी बनाने से। How many of you have ever made ghee or see ghee made? आपने से कितने लोगों ने खुद घी बनाया है? Okay, so the chanting is like the heat. You turn the heat on to start making the ghee, right? जब उस अग्नि के समान है जब आप गर्म करना शुरू करते हैं घी। So when the heat comes up, what comes up when you're making ghee? What comes up? Water evaporates. Okay. जब आप गर्म करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले क्या ऊपर आता है? There's something that comes up. What is it? Buttermilk. But what is that called? If you're trying to make clarified butter, what's coming up? It's wasteful particles. Impurities. अशुद्धता। Impurities. So when we chant, Krishna very kindly allows the impurities inside of us to come up to our view so we can see them. तो जब हम जप करना शुरू करते हैं तो कृष्ण कृपा पूर्वक हमारे अंदर की जितनी अशुद्धता है उसको तरलता पिलाते हैं जिससे हम उसको देख सकें। What happens when we see the impurities? What happens? तो जब हम अपनी उस अशुद्धता को देखते हैं तब क्या होता है? Think about it, not as opposed to making ghee, but think about when you see impurities coming up inside of you, what do you want to do? तो जब I want आप to remove them. Remove it from our body. You kind of want to remove them. आप उनको हटाना चाहते हैं The sense of guilt comes that we are impure and still doing chanting and still nothing. Right, and so what we usually do is we want to get rid of them, but we want to get rid of them really quickly, so we stir them back in. तो मैं उसको देख के उसको हटाना चाहता हूँ परंतु बहुत जल्दी हटाना चाहता हूँ और इसके लिए मैं क्या करता हूँ उसको वापस मिलाना शुरू कर देता हूँ कि मेरी आंखों से ओझल हो जाए।
We want to suppress them because we feel really shameful, we feel embarrassed. Oh my gosh, look at all that cruddy stuff coming up that looks so awful. I got to get rid of that really fast, right? That's the fastest way, right? तो मुझे बहुत शर्मसार महसूस होता है और इसलिए मैं उसको दबाना चाहता हूँ और इसलिए मैं उसको वापस उसमें मिला देता हूँ। We avoid the pain of looking at those impurities. क्योंकि मैं उस दर्द से बचना चाहता हूँ जो मेरे को अशुद्धता देखकर होती है। When we take the time to clear the impurities aside, thank you. When we take the time to clear the impurities aside, what do we have? तो जब मैं समय लेता हूँ उस अशुद्धता को हटाने के लिए, तब क्या होता है? What do we have? Purity. We have some clarity, we have some purity, तो कुछ स्पष्टता आती है, शुद्धता आती है। we can see more clearly. We're not seeing through the filter of our impure, conditioned mind. तो हम अपने उस फिल्टर से नहीं देख पा रहे, देखेंगे जो अशुद्ध मन का है। And when we can look at our own impurities, we can understand I am a jiva soul and I have some conditioning. और मैं शुद्ध रूप से इस बात का साक्षात्कार कर सकता हूँ कि मैं एक जीवात्मा हूँ। Now at this stage we can up our relationship to ourself and we can start having unconditional love for this jiva in here that's struggling, trying to become purified, which is a very challenging thing. It's challenging enough to be a soul in a human machine, but if you declare, I want to become purified, you're taking on the bonus points. तो एक ऐसा जीव जो मनुष्य शरीर में पहले से ही संघर्ष कर रहा है और जब आप जप करना शुरू करते हैं तो आपने इस संघर्ष को और बढ़ा देते हैं क्योंकि वो सारी अशुद्धता आपके सामने दिखेंगी इस पर। तो ऐसे जीव के प्रति एक नया संबंध बनाने की आप शुरुआत कर सकते हैं जिसका आधार करुणा है। So when we take on being able to be with our own impurities, with unconditional love, with understanding, with even a respect, wow, you are really struggling really hard, you're really wanting to become purified, you're really in this intensive heating process. And you're in it for the long run. Wow, congratulations, wow, that's great. तो जब मैं इस नया जो संबंध है इसकी शुरुआत मैं करता हूँ एक प्रेम के आधार पर, निस्वार्थ प्रेम या कम से कम एक सम्मान के स्तर पर अपने खुद के प्रति सम्मान जागृत करना और इस बात के लिए अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेट करना कि कम से कम मैं ये देख पा रहा हूँ। When we can have that much understanding, forgiveness and acceptance for our own conditioned nature, our own jiva soul, and then, really honoring the journey of that soul to become purified, we can honor and respect anybody and everybody, even someone who's not practicing devotional life. Can you repeat? I was Space. fascinated. No, not fascinated. It's Fascinating? fascinating. When we can honor and respect this jiva inside here that's really determined to become purified and it's struggling, and when we can really acknowledge and respect that soul on its journey, तो जब मैं अपने जो जीव है उसको मैं पूर्ण रूप से स्वीकार करता हूँ, उसको क्षमा करता हूँ और उसका सम्मान करता हूँ, तो एक बहुत ही शुद्ध जगह से मैं अपनी आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ा सकता हूँ। and when we can accept that we're not Krishna and we're just a little jiva that makes mistakes and it's struggling and really yearning to find itself, और जब मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि मैं कृष्ण नहीं हूँ, परफेक्ट नहीं हूँ, ये एक जीवा हूँ इस मनुष्य में और संघर्ष कर रहा हूँ और गलतियाँ होती हैं। when we can forgive ourselves for the unlimited amount of mistakes we make because we are a jiva, और जब मैं अपने खुद को क्षमा करता हूँ अपनी अनंत गलतियों के लिए क्योंकि मैं एक जीव हूँ, then we can honor and respect any and everyone else, even if they're not practicing devotional service, because we know it ain't easy. We know it. तो तब मैं किसी भी जीव को सम्मान कर सकता हूँ,
क्षमा कर सकता हूँ उन सभी को जो भक्ति में नहीं है, उन सबको भी, क्योंकि मेरे को इसका खुद का साक्षात्कार है, मैं जानता हूँ. We can value that soul that's struggling in this human experience with this human mind. और मैं उस दूसरे जीव को वैल्यू कर सकता हूँ जो उसी तरीके से संघर्ष कर रहा है अपनी प्रोग्रामिंग के साथ अपने शरीर में. When you have that self-respect and that self-compassion, and then you can share that with others, how deep can your relationships be? They'll be real, they'll be authentic. You'll really be able to connect with another person. Why? Because you're connected with your own self. जब आपके पास आत्मसम्मान है और आत्म करुणा है, तब आप दूसरे जीव के साथ एक बहुत गहराई के साथ संबंध जोड़ सकते हैं. So, that was 45 minutes. That's the foundation of all relationships. The way we treat ourselves is often the way we treat others. तो ये सारे संबंधों का आधार है. जिस प्रकार से मैं अपने साथ व्यवहार करता हूँ, अधिकांशतः मैं दूसरों के साथ भी उसी तरह व्यवहार करूँगा. If we're hard on ourselves and harsh with ourselves, we'll probably treat others the same. अगर मैं खुद के साथ बहुत ही क्रूर हूँ, तो अधिकांश संभावना ये है कि दूसरों के साथ भी मैं क्रूरता के साथ व्यवहार करूँगा. So, I wanted to give a little time because it was a pretty deep and intensive topic, which I tried to cover concisely and precisely. If anybody has any thoughts, anything that they heard tonight that they had never heard before, something of value that they valued, any questions, any discussion, any corrections from anybody, that I said anything? I have a question. Like you gave an example that with the chanting and heating on, we can see the impurities. But how do I take that impurities out of my system? You want to translate? तो जैसे आपने उदाहरण दिया घी का, जब करना शुरू करते हैं तो अपनी अशुद्धता को मैं देख पाती हूँ. तो उस अशुद्धता को देखने के बाद अपने सिस्टम से बाहर कैसे निकालूं? The first step is to acknowledge that they're there. Oh, wow, I have some impurities. तो पहला कदम होगा इस बात को स्वीकार करना कि अशुद्धता वहाँ पर है. Not trying to shield them, not trying to blame it on anybody else. I've got impurities. उसको किसी प्रकार का शील्ड से प्रोटेक्ट करना या दूसरों पे दोष करना कि उनकी वजह से है, ये सब नहीं करना. ये पहला कदम होगा, सिर्फ स्वीकार कर. Step 1, that's 50% of the problem right there. Just being able to see and identify and name the impurity. 50% of the problem. 50% समस्या यही है कि उसको देखना, उसको स्वीकार करना, उसको नाम देना. Second step, instead of beating ourselves up and judging ourselves for having impurities, I mean, that's why we are here. Instead of beating ourselves up and judging ourselves, be curious. Wow, where did that come from? Why do I keep doing that? What am I getting out of that? तो दूसरा कदम यह होगा कि बार-बार अपने आप को पीटना, अपने आप को जज करना कि ये क्यों है, उसके प्रति जिज्ञासा का भाव रखना है कि वाह ये कहाँ से आए है और मैं बार-बार इसको क्यों करती हूँ, इसमें मुझे क्या प्राप्त होता है. And then we can pray to Krishna and ask our mind, my dear mind, what one step could I take to practice something different besides this habit? Is there another habit I could practice besides this habit? I've been practicing this for a long time. What else could I do? What else might I do? Curious. और तीसरा कदम भगवान से प्रार्थना करना और मन को कहना, मेरे प्रिय मन, ऐसा कौन सा एक कदम मैं ले सकती हूँ कि मैं एक नई आदत बनाऊं, कि एक नया व्यवहार बनाने के लिए मैं कौन सा ऐसा एक कदम ले सकती हूँ. That's the short answer. The long answer is in the books. तो ये संक्षिप्त उत्तर है, बड़ा उत्तर इन पुस्तक में. It takes time. We want to learn how to encourage ourselves at little steps.
The problem is sometimes we're looking to go from 0 to 100. You know, here's the bar and we got to get there as quick as we can. And anything in between is unacceptable. तो अक्सर क्या होता है कि मैं बहुत तुरंत समाधान चाहती हूँ कि 0 से 100 बहुत कम समय में, कि ये स्तर है, ये स्टैंडर्ड है और इसके बीच में जितने स्टेप्स हैं इसको मैं स्वीकार नहीं करना चाहती, बस यहाँ तक पहुँचना है तुरंत. Anything that's not perfect is a failure. और जो भी ऐसी चीज जो ये यहाँ तक नहीं पहुँचती, परफेक्ट नहीं है, वो सारी फेलियर है. So just imagine there's a little 1-year-old learning how to walk, right? कल्पना कीजिए 1 साल का कोई शिशु है जो चलना सीख रहा है. So it's wobbling and it's holding onto the chair, and I say, "Oh my gosh, you are so weak. Like, what is wrong with you? Come back when you can walk." और मैं उसको देख के कहूँ कि हे राम तुम कितने कमजोर हो, ऐसे लड़खड़ा रहे हो, मैं तुमसे बाद में बात करूँगी जब तुम थोड़ा शक्तिशाली बनो. What's that child going to do when I say that? Tell me. तो वो जो बच्चा है वो क्या करेगा जब मैं उसको ऐसे कहूँ? I'm going to what? Child will not bother. No, the child will probably sit down and cry because you just yelled at it. Actually, on the psychological level, the child will feel demotivated. And Yes, for sure. And then maybe you'll even get motivation despite the fact that I discourage you. And then you take a few steps someday and like, you fall down. You are so fallen. What is wrong with you? Come back when you can ride a bike. तो वो जो बच्चे पे क्योंकि मैं चीखी हूँ तो वो रोना शुरू करेगा या बहुत हतोत्साहित होकर वहीं पर बैठ जाएगा. तो कुछ कदम चलेगा, उसके बाद जब गिरता है और उसको गिरने के बाद मैं बोलना शुरू करूँ कि तुम तो हर कदम पे गिर जाते हो, मैं तब आना जब तुम कुछ बाइक चलाना सीख जाओ. तो क्या होगा उस बच्चे का? Would we do that to a child? We should motivate that child. Why do we treat this little jiva child inside of us that's on this beginning the spiritual path? Why do we treat that child with that much disgust? Is that all you can do? Is that the best you can do? What's wrong with you? Oh my gosh, look at that one, so much better than you. You're so slow. What's taking you so long? Oh my gosh, we berate ourselves right and left and right and left, and then we think we're going to have the energy to like continue. तो इस बच्चे के साथ क्या हम ऐसा करेंगे? तो जब जो एक जीवा है जिसने अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू की है, तो उसके साथ हम ऐसा व्यवहार क्यों करें? तो बार बार अगर हम उसको बोलेंगे कि तू इतना पतित है, इतना गिरा हुआ है, तो कुछ नहीं कर पाएगा, तो उस जीवा क्या होगा? When we can start to acknowledge the little steps we take and say, wow, I didn't yell, I didn't get angry, and usually I would get angry, and we can get excited about that, whew, that's a positive reinforcement of a new habit. तो जो मैं छोटे छोटे कदम ले रही हूँ, अगर मैं उसको स्वीकार करूँ, उसको एक्नॉलेज करूँ कि वाह इस बार मैं चीखी नहीं, और वाह इस बार मैंने एक नए तरीके से व्यवहार किया, और उसके प्रति एक्साइटमेंट हो, तो वो जो सकारात्मक व्यवहार है वो बार बार उसको रीइंफोर्स होगा. How did we get all those habits? Tell me, how did we get those habits? जो हमारी आदतें वर्तमान में हैं वो कैसे बनी? How did we get them? वो हमें कैसे प्राप्त हुई जो आदतें मेरी अभी हैं? I'm sorry? Learning from the society, Yeah. from the childhood. How is a habit developed? कोई भी आदत कैसे बनती है? Repeating the same thing over and over and over, it becomes a habit. एक ही चीज को बार बार दोहराने से वो आदत बनती है. We have habits. हमारी आदतें हैं. How do we create a new habit? तो अपनी नई आदतें कैसे बनाएं? Do something new and different over time, consistently, over and over and over. एक नई चीज, एक अलग चीज को पुनः करना बार, तो समय के साथ तो नई आदत भी बनेगी. We're either practicing our old habits or we're practicing new habits. या तो मैं पुरानी आदत का अभ्यास कर रहा हूँ या अपनी नई आदत का अभ्यास कर रहा हूँ. Okay, now we're down to what? 5 minutes? 5 minutes. Any other thoughts, questions? किसी का और कोई विचार, प्रश्न, Go ahead. टिप्पणी?
Is there any difference between male programming, female programming, or say trans programming? Because in Indian scriptures we generally see male guru, we don't see female gurus who are giving diksha, and there are some special privilege for males like Pindadan and other things. What is the difference? Well, basically, we all have similar programming as males and females. Similar. There's a basic jiva programming that the soul in a human machine has. तो प्रभु जी का प्रश्न है कि एक पुरुष की प्रोग्रामिंग में, एक महिला की प्रोग्रामिंग में, ट्रांस प्रोग्रामिंग में कोई अंतर होता है? क्योंकि भारत में हम अक्सर देखते हैं कि जो पुरुष हैं वही गुरु बनते हैं, वही दीक्षा देते हैं, इत्यादि। Within that general, माता जी ने उत्तर दिया कि लगभग सबकी जो प्रोग्रामिंग है लगभग एक समान होती है। within that generalized programming, there are personality types on the Enneagram, there are female, there are male, there are different kind of mentalities. We want to be able to understand our own mentality first. We got to understand our own mentality. And yes, people have different mentalities, but the basic mentality is that I am this programming. That's the mentality of it. I am this programming, and if I let go of this programming, I'm nothing. And that's not the truth. तो उस जनरल प्रोग्रामिंग में बहुत सारी डिटेल्स हैं, अलग-अलग व्यक्तित्व हैं, अलग-अलग चरित्र हैं, तो परंतु जो उसका मूलभूत आधार है, हर कोई अपनी खुद की पहचान अपने प्रोग्रामिंग से करता है। और मुझे लगता है अगर मैं अपनी इस प्रोग्रामिंग को छोड़ दूं तो मैं कौन होऊंगा? तो इस असुरक्षा से उसको पकड़े रखता है। So I want to honor your time because I know you're all busy people and you have a lot in your lives. I could stay a little longer and talk a little longer, but I do want to value your time. It's 9 o'clock. I do want to offer the sale of these books. These are each, this is a set. This is about the mind and the false ego. This is about the anartas that I call the habits. This is a set. These are 400 rupees each. And this is the story of my life and about friends and enemies, what to do about Sue. That's 400. And this is about compassion. And that's 300. And if you get all 4 books, you get a discount of, I think, 100 or so rupees. And if you get those 2 books, you get a discount of 100 rupees. That's a lot to say. Anyway, I wanted to just, give you a little taster because really relationships is about our relationship with ourselves. And there's so much more to say about it, but I mean, what can you say in 1 hour? I hope I covered something. मैं आपके समय का सम्मान करना चाहती हूँ। मुझे पता है आप सब बहुत व्यस्त लोग हैं, इसलिए मैं समय पे यहाँ समाप्त करना चाहती हूँ। माता जी की ये 4 पुस्तकें हैं। माता जी ने इसके प्राइसिंग बताई है। That's 400, 400, 400। जो पहली बुक है वो झूठे अहंकार के बारे में, दूसरी बुक अनर्थस के बारे में है। जो लास्ट बुक है वो माता जी की आत्मकथा है, What to do about you। और जो तीसरी पुस्तक है वो करुणा के ऊपर है। तो माता जी कहने अगर आप 4 पुस्तक लेंगे तो आई थिंक उस पर 100 रुपीज़ का डिस्काउंट है। जो पहली 2 पुस्तक लेंगे अगर ये पूरा सेट लेते हैं तो उस पर से 100 रुपीज़ का डिस्काउंट है। परंतु जो मेरे पूरे सत्र का उद्देश्य था एक टीजर देना कि जो पूरा का पूरा जो संबंध है एक दूसरे के साथ हमारा जो संबंध है उसका जो आधार है वो है कि मेरा खुद के साथ संबंध कैसा है। तो इस 1 घंटे में मैं आशा करती हूँ कि जो मैंने बोला उसमें कोई आपको वैल्यू दिखी और उस वैल्यू को आप स्वीकार करेंगे। I put all my mistakes in those books so you don't have to make the same ones I made, and I made a lot. तो माता जी कह रही है मैंने बहुत सारी गलतियाँ की हैं अपने जीवन में और उसको मैंने इन पुस्तकों में लिखा है। आप सबको गलतियाँ दोहराने की आवश्यकता नहीं है। Any thoughts? I mean, was the class of value to you? I just need a little feedback. Yeah? Was it relevant? Practical, there's more practical stuff in the books. I really thank you. I really honor and value that you are souls in human machines and you're really on a journey. You're on a real journey and it can be a roller coaster ride. Don't get off. Don't get off the ride. Just keep going and just keep going and Krishna will reveal more and more to you.
तो मैं आप सबका सम्मान करती हूँ। आप सब जीवात्मा हैं एक मनुष्य देह में, और आप एक असली यात्रा पे हैं, बहुत ही जीवंत यात्रा पे हैं। और जो ये यात्रा है इसमें बहुत सारे उतार और चढ़ाव आएंगे रोलर कोस्टर की तरह। उस यात्रा से, रोलर कोस्टर से उतरिए मत, अपनी यात्रा को जारी रखिए, और जो कृष्ण है आपकी जो आगे की यात्रा है उसको प्रकाशित करेंगे। And the more you work on your own self and your relationship to your own self, your other relationships will improve vastly, I promise you. जितना ज़्यादा आप अपने खुद पर कार्य करेंगे और आपका जो संबंध है खुद के साथ उस पर कार्य करेंगे, तो मैं आपसे वादा करती हूँ बहुत प्रचुर मात्रा में आपके सारे संबंधों में वो प्रभाव दिखेगा। You can't really change another person. I tried plenty of times. आप एक दूसरे व्यक्ति को नहीं बदल सकते, मैंने बहुत कोशिश की है। This is the only person that we're responsible for changing and that we have any chance of changing. एकमात्र जिम्मेदारी जो आपके पास है किसी को बदलने की, वो है आप खुद। और सिर्फ आप अपने आप को ही बदल सकते हैं, असलियत में आप किसी और को नहीं बदल सकते। And when we invest in this, we get short-term rewards and long-term rewards. और जब आप इसमें निवेश करते हैं इस खुद जीव में, तो आपको शॉर्ट टर्म परिणाम भी मिलेंगे और लंबे परिणाम भी मिलेंगे। Thank you so much for your time, for your attention, for your participation, for your questions. Vanchakalpatubhyascha kripasindhubhyeva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. And anybody who wants a book, I'm up here. I'll sign the book. And then you can get a little bit more information. Hare Krishna.